Friends, let me tell you two topics in income tax. Everybody faces the problem. One is, of course, Hindu undivided family, and the second is charitable trust. Let me tell you, no one knows anything about basically the Hindu undivided family also and charitable trust. Lot of confusion, lot of dispute, lot of litigation is there on those two topics. I remember when we were redrafting this income tax law. At that particular point of time, I told them one thing is very important, that people got their registration long back, about 20 years back, 30 years back, 40 years back. They have got a registration number, but they do not have the registration certificate. Either it has been misplaced or lost or something has happened or it is torn. They are not having their registration certificate. And normally what happens during the course of proceedings, assessment proceedings, the AO asks for the registration certificate, which they are not able to produce. A suggestion was made by me that let's do one thing. Let everyone apply for re-registration or re-approval. Let them apply in a simplified form. No question will be asked. You just give them digital registration, and which will never be lost. This was the purpose of giving them suggestion that let them apply once again, but no question to be asked. देखिए संजीव जी हिंदी में कहते हैं ना, गए थे ईद मनाने रोजे गले पड़ गए. I suggested them a good thing, which was definitely accepted, but at the same time, I never told them that this will be valid for 5 years. Earlier, once you get a registration, it was a permanent registration, or once you get an approval, it was a permanent approval. But why now? What have they done? They say, look here, you apply, go for re-registration. We are not going to ask you any question. Form 10A, but 10A has become very complicated. I'll tell you why. We go for application, apply for re-registration. We'll give you re-registration, but look here, it will be valid for a period of 5 years. And you will have to apply for renewal of registration at least 6 months prior to the expiry of the period of 5 years. This I never said. Now the process has started because everyone will have to go for renewal. One is re-registration, but then renewal every 5 years. That is another point. And the 5-year renewal is just like the first time allotment. They will ask you so many things. They will ask for so many documents. And it is as if a new registration will be done. Another point which they are saying, yes, now onwards, if you apply for registration, new registration, we will give you registration in 1 month's time. We will not wait. We'll give you in 1 month's time, but that will be called provisional registration. Nothing will be asked. You fill up your forms, give the document, whatever required. We'll give you a provisional registration, but that provisional registration you will have to go for regular registration, either within 6 months from the date of the commencement of the charitable activity, or at least 6 months prior to the completion of period of 3 years, because this provisional registration will be valid for a maximum period of 3 years. What was said? Once you get a provisional registration, you commence your charitable activity within 6 months of the commencement of charitable activity, or at least 6 months prior to the completion of 3 years, you will have to apply for regular registration. And that regular registration will be valid for a period of 5 years. Will be valid for a period of 5 years. So the question is, I never told them that you will have to go for only 5-year time, but now it is there and we have to apply. I'll come to that application also. But before that, there were certain other issues where I used to have a lot of problem, and people used to tell me that, sir, you are wrong. I never said, no, I am not wrong. You are not able to understand the concept which I wanted to tell. First concept was, if there is a corpus donation. Now, if it is a corpus donation, you know that it is exempt. Everyone knows it is exempt. And since it is exempt,
And if you apply that corpus for any purpose or specified purpose, the question is, it cannot be treated as application. How can you take double exemption? One, the corpus donation is exempted under 11(1)(d), and then you say that if you use any money out of this corpus, that will also be treated as application. The question does not arise. But they said where it is written. Now, amendment has come that corpus donation is exempt, but any amount spent out of the corpus donation, shall not be treated as application of the same year. It will not be treated as application. One point was this, which was clear. Now, another problem which we were facing. Sometimes what happens is, suppose during the year, you have received donations are the total receipt of the trust is about, let's say, 2 crores. But this year, instead of saving anything, they have spent 2.5 crore. Excess application. I will not say loss. In a terminology of commerce, where people always say loss, it is not a loss. It is an excess application during the year. There were so many high court judgments where they said excess application can be treated as application of the next year. Application of the next year. And from the next year income, you can treat it as application. But these were all high court decisions. I told them there are so many high court decisions, and why don't you allow this excess application and give in a form number 7, the column for excess application. They said nothing doing. We have gone to the Supreme Court, and the matter is still pending in the Supreme Court, so we will not give you this benefit of excess application. Why the high courts were giving. Then the judgment came of Subro's Foundation in 2018. When this judgment came, Subro's Foundation clearly said that excess application can be treated as application of the subsequent year, and that's why it should be allowed. At that particular point, I told them, now it is a Supreme Court decision. Now you should allow this excess application to be treated as application of the subsequent year. He said, we will wait. I don't know what was the reason. But now they have made a clarity. They have put a rider and saying that excess application cannot be treated as application of the subsequent year. It will not be allowed to be carried forward to claim it as an application of the subsequent year. Nothing to worry. This point they raised, that excess application of 1 year, suppose this year you have spent 2.5 crore and it was 2 crore, 50 lakh cannot be carried forward to be treated as application of the subsequent year. Wait. But they came out with a very good idea that if you use this 50 lakh, which is extra, from your corpus fund, please only note only from corpus fund, not that fund of 15% accumulation. It is if you are using this 50 lakh from the corpus fund, and it will not be treated as the application of this year 50 lakh, but in subsequent year, if you refund that amount and fill up the corpus again out of the current year money which you have received, you give this back to the corpus, you pay back to the corpus, we will treat as an application. What are I saying? Suppose you have spent 50 lakh extra. They say, please note, 50 lakh should have been spent out of the corpus fund. Meaning thereby, Mr. Sanjeev Chaudhary ji, meaning thereby, you will have to keep corpus fund separately. How do you know that it has been spent out of the corpus fund? Because I may be having general fund also, where I am accumulating 15%. I may be having capital fund. So they say, no, you should have spent this 50 lakh out of the corpus fund, as if you have borrowed from the corpus fund. Correct? Not an application of current year. But in subsequent year, out of the income, out of the receipt which you have done in the subsequent year, you pay back this money to the corpus, whether in 1 year or more than 1 year, we will treat it as application of that. So next year, out of 50 lakh, I pay back the corpus 30 lakh. So that 30 lakh will be treated as application of the subsequent year if I have repaid the money up to the corpus fund. The balance 20 lakh, suppose I have given in the next year, next subsequent year, that will also be treated as, if you pay back to the corpus, you fill up the corpus, we will treat it as an application. Nothing bad.
They are saying we are not giving you the benefit of 15%. That 15% you've already taken exemption because 85 applied, 15% accumulated. That benefit of exemption has been given to you. But corpus is also exempt, no doubt. But since you have utilized the corpus and you have paid back to the corpus, out of the subsequent receipts, we will allow you an application of that one. So there is no problem. Sabrose Foundation, even if ruled nullified, but a better proposal. But my dear, I'm telling everybody, please note, you will have to keep corpus fund separately in 11.5 vote bank. Keep it separately. Don't mix up the corpus fund with the capital fund or a general fund. Because corpus fund, if you have to show that you have utilized this money by withdrawing from the corpus, fund, and then you are paying back to the corpus in a subsequent year, then only you will get this benefit. Otherwise, no benefit will be given to you. This is one change. Another very good change, and I used to pick up, fight doesn't mean academic discussion, not a fight. They used to always discuss with me. Look here, this is a college. It wants to buy certain asset. Let's say building. The cost of the building is, let's say, 4 crore. And I have money, only 2.5 crore lying with me in the bank. And I borrowed 1.5 crore from outside. I've taken a loan of 1.5 crore. 2.5 crore, it was there in my saving bank account. 1.5 crore, I took a loan and I bought a building for 4 crore. And I used to ask them, what is the amount of application of the current year? What is the amount? They said, 4 crore. Aapne 4 crore ki building kharidi hai. So 4 crore. I said, nothing. No. It is not 4 crore. He says, why? 4 crore is the asset. I said, 4 crore is the asset. I agree. You have shown in the balance sheet, asset side 4 crore, balance reduced, saving bank balance reduced by 2.5 crore, and loan is the liability side 1.5 crore. But the application is not 4 crore. I said, loan is not an income. And you have applied loan. How can you treat it as an application? You have to apply the income. Loan is not an income. So this 1.5 crore will not be treated as an application. Application of current year will be only 2.5 crore. They say, nahi 4 crore, nahi. 2.5 crore application hoga. And whenever in future you repay the loan, we will treat it as an application of that year. This is income tax, not accountancy. This is income tax. That current year application will be 2.5 crore. Subsequent year, when the loan is repaid and even interest is repaid, that is application of the fund. So question is, this also has been made clear by bringing the amendment that loan will not be treated as an application. Whenever the fund of loan is given, at that particular time, there will be application of fund. Till that time, it will not be treated as application. Application sirf 2.5 crore hoga building ka. The rest will be subsequent year. Subsequent year, you pay back loan only 60 lakh. Only 60 lakh application. Next year, you paid 90 lakh. 90 year application. Clear, sir? This is the another point where a lot of dispute was there, and the dispute is now settled. Any question till now? Any question till now if you have? If you don't have, we proceed. If you have your question, you can ask me. So the question is on some Form 10B filing with the return, not on the issue. That I'll be doing. Sir, there's one question here. Whether this loan repayment can be made through the corpus fund if the trust is not able to get some money here. So what will happen that part here? Corpus को अगर आप utilize करेंगे वो application नहीं माना जाता. Okay. So where is the question? Where is the question of treating as application? You will have to give it out of the current receipt to pay back, and that will be treated as application. Corpus has been given exemption, and utilization of corpus is not an application. That utilization which I told you for excess application, that has to be refunded back to the corpus. Then only it is treated as corpus. But it is not for loan. Not for loan. Okay, sir. Okay. Coming back.
I have another question, which is on the registration actually. So should I take We it will up? be starting registration now. We'll be Okay. starting. I'll be starting registration. After completing registration, then I'll take other issues of the charitable trust, because the burning topic is because 31st August is the last date for filing re-registration. So everybody is worried about that. The portal is not properly working. What will happen? If the portal doesn't work, they will have to give extension. If it works, there is no question of any extension. Let's see what is going to happen. That I will not tell you. But coming back to the issue, when I told you that we had suggested that you have to apply for re-registration, they accepted our proposal and re-registration application has to be done. But now, wait. First thing is, we have exemption of under charitable trust under two sections. One is called 1112, read with 13, no doubt. Another is section 10, clause 23C. Section 1023C, there you go get registration. There is a case of approval. Under 1023C, there is approval. Under 12A, there is registration. There is a difference between registration and approval. I tell you in a short while. My point is, section 1023C, subclause 3IAD, 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE, IV, subclause V, VI, and VIA are very important. Sabko aati hai. Everyone knows, but they don't remember the subclause. I am giving you the subclause, otherwise it is nothing new. I'll come to the subclause why I have to explain you before I go for registration. Sir, section 10 clause 23C, subclause 3IAB states, income of a university or educational institution not for making any profit but for imparting education shall be exempt if it is wholly or substantially financed by the government. Wholly substantially financed by the government, income of that university or educational institution shall be fully exempt. Section 1023C, subclause 3IAC says, income of a hospital or a medical institution not for making any profit but for philanthropic purposes shall be exempt if it is wholly or substantially financed by the government. Now let me tell you, wholly or substantially. Nothing to tell you about wholly financed by the government. Substantially, they said more than 50% grant should come from the government. Then only it is substantially financed. More than 50% grant should come from the government. Please note, this grant is to be checked up every year. If this year 55, next year 49, then you are not covered next year under 3IAB. My point is, grant more than 50% should be from each year. Whichever year you are having more than 50%, you fall under section 1023C, 3IAB or 3IAC. You fall under that 3IAB or 3IAC. Otherwise, you don't fall. So, isme kya hai, sir? There is no restriction at all of making any applying for approval. No approval required. No audit required. No Form 10BB required. Audit bhi nahi hai. कोई भी 85-15% की condition नहीं है इसमें. Their income is totally exempt, but they have to file return of income every year. That's all. The only condition is filing of return of income mandatory. Otherwise, no question of any approval. उनको तो अभी भी apply नहीं करना. No question of any approval. No question of any audit. No question of any 85-15%. Their income is totally exempt, provided wholly or substantially financed by the government. But they have to file return. Clear ho gaya, sir? 1023C, 3IAB, 3IAC. Next आया 3IAD and 3IAE. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध आदमी, मेरी चौधरी जी तो मेरे पास सामने बिल्कुल बैठे हैं, एक आध जने और आ जाए तो वीडियो में, तो मैं I can see the face and understand whether they are following or not. आ गए प्रकाश जी, आ गए हैं. वो तो बड़े मेरे से भुक्तभोगी हैं, मेरे से तो सुनते रहे हैं लेक्चर पुराने भी, और अब भी सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा. चलिए सर, ये अब आया सेक्शन 1023C, 3IAD, 3IAA. जरा ध्यान से सुन. Income of a university or educational institution not for making any profit
but for imparting education shall be exempt if the gross receipt do not exceed. मैंने जानकर एक पॉइंट छोड़ दिया है. Gross receipt do not exceed rupees how much? How much, sir? प्रकाश जी, सर ये पुराना है 1 करोड़, अब 5 crore, I 5 think. करोड़ हो चुका है. ये लास्ट ईयर 5 करोड़ कर दिया गया, Yes, sir. ये 5 करोड़ हो गया है. 1 करोड़ नहीं है, इस साल से 5 करोड़ हो गया है, 5 करोड़. तो ये टोटली माफ है. अगर आपका 5 करोड़ से कम है, इवन हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन 3IADE डू नॉट एक्सीड 5. सर आप ध्यान से सुनना प्लीज, एवरीबडी शुड लिसन टू इट केयरफुल. ये अर्लियर 1 करोड़ था, इसको 5 करोड़ कर दिया. आई वॉज रियली सरप्राइज. यहां तो घटाते हैं, इतना बड़ा एग्जेम्पशन देने का क्या मतलब है. देन आई रियलाइज्ड, और मैं बिल्कुल बुलाया गया था. आई वॉज इन्वाइटेड टू गिव ए लेक्चर इन द पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट वाले जब हो जाता है तो एमपीज को बुलाकर लाइब्रेरी में लेक्चर दिया जाता है, तो मुझे बुलाया गया. मैंने कहा इनको क्या मैं बोलूंगा, ये इतने टेक्निकल कहाँ से इनकम टैक्स में समझ में आए. फिर मुझे ध्यान आया कि चैरिटेबल ट्रस्ट तो सब इनके ही है, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल तो इन्होंने ही बनाए हुए हैं. एवरी स्कूल कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन देयर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ पॉलिटिशियन इज इन्वॉल्व. तो मेरे को एकदम स्ट्राइक कर गया, ये 1 करोड़ का 5 करोड़ तो इन्होंने कराया है. समझ में आया. चैरिटी बिगिंस एट होम. ताकि 5 करोड़ हो जाएगा तो कोई अकाउंट से नहीं, कुछ नहीं करना. नो ऑडिट, नो ऑडिट रिपोर्ट, नो क्वेश्चन ऑफ अप्रूवल, नथिंग, ओनली रिटर्न. तो मैंने लेक्चर ही यहां से शुरू किया. आई सेड look here, earlier it was 1 crore, it has been raised to 5 crore. Everyone was very happy. मैंने कहा कराया तो सब आप ही नहीं है, 5 करोड़ कराया है. कहते नहीं नहीं. मैंने कहा 5 करोड़ हो गया. मैं कहा लेकिन रुक जाइए, आप इतना इसको सिंपल मत समझिए. कहते क्या हुआ. मैंने कहा 5 करोड़ तो कर दिया है, लेकिन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस है, वो आपने नोटिस नहीं करी. एक तो इन्होंने प्रोवाइजो डाल दिया और प्रोवाइडेड कर दिया that if you are running a school, college, etc., as well as hospital or medical institution, पहले दोनों का अलग अलग 1 करोड़ होता था. प्रोवाइजो में डाल दिया the aggregate receipt of both should not exceed 5 crore. अब दोनों मिलाकर, पहले तो सेपरेट सेक्शन है, स्कूल कॉलेज का सेपरेट है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का सेपरेट है, 1 करोड़ ईच था. यहां कर दिया 5 करोड़ इन एग्रीगेट. उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं. कई कहने लगे हमारा तो सिर्फ स्कूल कॉलेज ही है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. कोई कहने लगे हमारा तो हॉस्पिटल है, क्योंकि कहते हमारे दोनों हैं. मैंने कोई नहीं. कहते 2.5 तो मिलेगा ना. मैं कहा हाँ मिलेगा. मैंने कहा रुक जाना, एक और बात. कहते वो क्या ला रहे हो, आप तो हार्ट अटैक कर रहे हो. बस सुनिए, पहले लिखा था ग्रॉस रिसीट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. प्रकाश सिन्हा जी लिखा था ग्रॉस रिसीट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़. इंस्टीट्यूशन. अब लिख दिया ग्रॉस रिसीट ऑफ दैट ट्रस्ट कैरिंग ऑन रनिंग दैट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ 5 करोड़. पहले क्या होता था, यू हैव ए 1 ट्रस्ट, देयर आर 5 इंस्टीट्यूशन बिलो दैट, 6 इंस्टीट्यूशन. Each institution you are getting a benefit of 1 crore. Now no question. Now it is of the trust running those institutions. Aggregate should not exceed 5. So it has to be trust as a whole. So it has to be trust as a whole, sir. As a whole, not per institution. Earlier it was per institution. ये क्या है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की. उन्होंने कहा ऊपर वालों ने करा लिया, इनकम टैक्स वाले छोड़ते नहीं है, उन्हें 2 चीजें नीचे से डाल, कर लो जो करना है. Now it is per trust, not per institution, and that is aggregate 5 crore. And second, 3IAD and 3IAE combined is 5 crore. It is not separate 5 crore. Clear, sir? Then there is 1023CIV. This is notified charitable trust. 1023CV, notified religious trust. जैसे आजकल राम जन्मभूमि राम व्यास को मिला है, वो सेक्शन 1023CV में मिला है. किस काम के लिए मिला है? मंदिर चलाने के लिए नहीं मिला. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल. मंदिर के लिए तो ATG होता ही नहीं है. फॉर टेम्पल रिलीजियस एक्टिविटी देयर इज नो ATG. व्हाट हैव दे गिवन? राम जन्मभूमि व्यास
they have given a benefit of 1023V exemption under 1023V, that is notification has been issued to give them benefit for the purpose of construction. So 1023CV, IV or V, you have to apply for reapproval. Sir, you have to apply for approval. Under 1023C, there is approval. Under 12A, there is registration. Either it is approval, here it is registration. The next is 1023C VI, that is school, college, educational institution, gross receipt exceed rupees 5 crore. Exceed rupees 5 crore, not 1 crore now, 5 crore. And next is hospital, medical institution, gross receipt exceed rupees 5 crore. This is 1023C VIA. Abdullah, please try to understand, if you have to apply under 1023C, the scope is limited. It is either for education or it is for hospital or medical institution. It is not for any other. But the benefit is that in case of 1023C, 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE, there is no question of any audit, only return is mandatory. But 1023C VIA is very much similar to section 12AA. I tell you that, very much similar to that. But please note the point, everybody who's listening to me, left side is approval, right side is registration. The people ask me, should we go for approval or should we go for registration? Because under 12A, registration in charitable purpose, even education is also covered under charitable, and medical also relief is also covered under education. So these educational institutions and hospitals are asking me, should we go for 12A registration or should we go for 1023C approval? Here it is approval, here it is registration. What is the difference? Before I can tell you what I have to do, what is the difference? Sir, first difference I've told you, here it is registration, here it is approval. What does it make a difference? I'll tell you. There is a proviso given under section 143, subsection 3. What is the difference? Let me tell you. You have to file a return of income. When assessment proceedings are taken against you for assessment, what really happens is, if you are registered under 12A, the AO will look into the case, scrutiny at the time of scrutiny, and if he finds that you have misused the fund or you have not used the fund for which it was established, or it has not been properly used, then AO may not give you exemption of that income. That is, the power is with AO. With AO. Or you have not carried on the object for which you are established. Power is with you. But once you are on 1023C, Prakashji tried to listen, the power is not with the AO. If the AO thinks that you have not followed the object, you are misusing the funds, you have committed a default, he will have to prepare a report and send this report to the authority who had given the exemption and telling them that they have committed a default, kindly withdraw their approval. Kindly withdraw their approval. This will be a report sent by the AO to the commissioner exemption. Then principal commissioner exemption will give you, commissioner exemption will give you opportunity of being heard. And after giving you opportunity of being heard, the commissioner will either give you, will withdraw the approval or may not withdraw the approval. Right, sir? If he does not withdraw the approval, after giving you a hearing, AO is duty bound to give you the exemption. And if he withdraws the approval, AO will not give you exemption. So this is the first basic difference. Approval, when you were applying under old law, approval was under 56D, and here the approval was under 10A. But in future, the same form is here, 10A or 10AB. But earlier, there was a separate form for 1023C and separate form for 12A. But now there is only one form, 10A or 10AB. I tell you that. Next thing. Earlier, sir, corpus donation was only exempt under section 11(1)D. Section 11, subsection 1, clause D. Prior to 1st April 20, please note, prior to 1st April 20, corpus donation was not exempt under 1023C. It was not exempt. Wait. When this law came,
that you have to apply once again. Last year it came, but it was postponed. I told them nobody will go to 1023C because corpus donation is not exempt. You should also allow exemption of corpus donation. So last year, third proviso, they inserted an explanation under section 1023C, third proviso, that corpus donation will also be exempt under 1023C. So no difference. Corpus donation exempt under 11(1)(d), corpus donation exempt under 1023C. No difference. Next, in the case of 12A, you have to file audit report in form number 10B. In form number 10B, in case of trust, this 1023C, you have to file report in form number 10BB. Separate form, 10BB. And I've seen people committing a mistake, particularly chartered accountant filing a form 10B, although they are registered under, approved under 1023C, or vice versa. Still, let me tell you, the report under 1023C is in form number 10BB, little different. And report under 12A is in form number 10B. Clear, sir? Now the basic difference. Try to understand. Sir, there is an explanation given under section 11, subsection 1. वो जरा explanation सुनिए. Suppose I am following mercantile system of accounting. I am following mercantile system. Section 8 company has to follow mercantile system. That is, the company, though they cannot follow cash system. But otherwise, suppose I am following mercantile system of accounting, and there is an income which has accrued but not actually received during the year. There is an income which has accrued but not actually received. You must have shown in your income and expenditure account on Yes, accrual basis, not actually received. How will you spend that? It is not received. How will you apply that? It is not received. So there is an explanation given that you can give an undertaking under Form 9A before the due date of return electronically. Form 9A to be submitted electronically before the due date of return. If you did file 1 day late, no question. That you can give an undertaking, such and such income has been taken into account but has not been received. I will apply this income in the year in which I receive it or year following that. मैं एक example देता हूं संजीव जी. Suppose I have made an FDR, compound interest, for a period of 3 years. 1 crore FDR, rate of interest 6% for a period of 3 years. Correct, sir? yes. First year, 6 lakh will come. It will accrue but not actually received because compounding. Accrued but not received. I can give an undertaking that this 1 crore has been has accrued but not received. I will apply this income in the year in which I receive it, that is the 3rd year, or year following it, that is the 4th year. अगर ये मैं undertaking दे दूं, तो it is called as deemed application of this year. It is called as deemed, actual application नहीं है, deemed application of this year. और फिर वो 4th year में देखेंगे कि मैंने वो spend कर दिया कि नहीं करा. अगर नहीं करेंगे तो फिर उस साल की income मान ली जाएगी 4th year. Suppose out of 1 crore I spent only 80 lakh, तो 20 crore income मान लेंगे, 20 लाख income मान लेंगे. ये undertaking हम दे सकते हैं. ठीक है सर? और दूसरी undertaking और है इसमें, clause B में. For any other reason, I cannot apply this income this year. I can give an undertaking, I'll apply it next year. और आप apply next year कर दो. वो 15% वाला नहीं है, कोई भी, मैं अगले साल अप्लाई करूं. ये अंडरटेकिंग फॉर्म 9A में देनी पड़ती है बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली. फॉर्म 9A इलेक्ट्रॉनिकली, और हम दे देते हैं. और क्या करते हैं, अगले साल आता है उसको कहते हैं उसको अगले साल करेंगे और पिछले साल वाला यूज कर लेते हैं. फिर अगले साल आता है उसको कहेंगे अगले साल करेंगे, पिछले वाला यूज कर लेते हैं. ठीक है सर? लेकिन ये 9A 1023C में नहीं है, वहां नहीं. अगर वहां अप्रूवल सिस्टम भी होगा तो भी अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. 9A is not there in section 1023C. It is there in section 11 and 12. It is not there. और इस वजह से आपको सोचना पड़ता है कि हम 12A में जाएं कि 1023C में जाएं.
बाकी वजह से 1023 आसान है, वहां पर बहुत आसान है क्योंकि वो तो एग्जेम्पशन ही है। लेकिन अगर आपका ऐसा इनकम है जो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपके पास एक ही चीज है, यू कैन एक्यूमुलेट मोर देन 15% अंडर 11(2), वो कर दीजिए, लेकिन आप अंडरटेकिंग 9A की नहीं दे सकते। ये क्लियर हुआ? ये बेसिक डिफरेंस है। अब आपकी मर्जी है, आप 1023C में जाएं या आप 11-12 में जाएं। अब जो ऑलरेडी 11-12 में है, मैं उनको कह रहा हूं कि आप 11-12 में ही रहो। जो 1023C में है, मैं कह रहा हूं अगर 5 करोड़ से नीचे है फिर तो अप्लाई ही नहीं करना। 5 करोड़ से नीचे है तो अप्लाई ही नहीं करना। अगर पहले आपने किया भी हुआ था 1 करोड़ के ऊपर की वजह से, अब तो करना ही नहीं, बिकॉज अप टू 5 करोड़ इट इज नो नीड ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन यू एक्सीड 5 करोड़, तो आप कर दीजिए। अब दूसरी बात एक और है, आप 11-12 में जाएंगे ना, तो आपके पास एक वो है कि वो 1023C इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। क्या होता था पहले, दोनों थे कईयों के पास। देयर आर सर्टेन ट्रस्ट दे हैड बोथ अप्रूवल एज वेल एज रजिस्ट्रेशन। उनको अप्रूवल भी मिली हुई थी 1023C में, उनको रजिस्ट्रेशन भी मिली हुई थी 12A में, और कभी वो 1023C में रिटर्न भर देते थे, कभी वो 12A में रिटर्न, 11-12 में। अब लॉ बन गया, यू विल नॉट बी गिवन बोथ, either go under 1023C or go under 12A. You cannot be given both. ये क्लियर हो गया प्रकाश जी? एक ही में जाना है तो डिसाइड कीजिए कहां जाना है। अगर आपके पास दो है, अगर आपके पास है ही एक तो बात ही खत्म हो गई। दो है तो डिसाइड कीजिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि 12A में जाइए वहां पर, क्योंकि आप मल्टीपर्पज ऑब्जेक्ट भी अलाउड है। आप यू कैन डू अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। इन 1023 इट इज ओनली एजुकेशन और हॉस्पिटल। अभी कोई आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो 1023C में मिलेगा ही नहीं। 12A में तो सब कुछ है, रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये सब चीजें वहां पर हैं, लेकिन ये चीजें कहाँ नहीं है? 1023C में नहीं। तो आपको सोचना है, अब जाइए, लेकिन अब अप्लाई करना है। किनको करना है? सर पहला पॉइंट तो ये है, दोज आर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल 31st March 21, they have to apply. All of them have to apply, even if they got it last year. जिसको 31/21 को भी मिला है उसको भी दोबारा अप्लाई करना है। Everyone who has got registration, whether 20 years back, 30 years back or 40 years back, they all have to apply. Or even last year up to 31st March, if they have received the registration, they have to apply once again. Agar you want to go to 12A, you have to apply for re-registration. Please note the word re-registration. And if you want to go to 1023C, you have to apply for re-approval. मेरी बात को समझ रहे सर? इधर वर्ड है री-अप्रूवल, इधर वर्ड है री-रजिस्ट्रेशन. You will have to do it. और लास्ट डेट आपको पता है कौन सी है? 31st of August 2021, अनलेस एक्सटेंडेड. ये बहुत बार एक्सटेंशन हो चुकी है. पहले तो ये पिछले साल आया था, फिर पिछले साल इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, फिर उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था. इट वाज ब्रॉट अगेन फ्रॉम 1st April and you were supposed to apply within 30th June, by 30th June, from 1st April to 30th June, but it is extended to 31st August unless otherwise extended. I can't say. If it is extended, is a different story. क्योंकि नहीं तो 31st August से आपको अप्लाई करना है. दोनों के लिए फॉर्म एक ही है सर, फॉर्म 10A. क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अप्रूवल नंबर डालना पड़ेगा. मेरी बात समझ गए सर? यस सर, डालना पड़ेगा. अब जरा कहानी सुनिए. कईयों ने लास्ट ईयर ही अप्लाई कर दिया 10A में, ये सोचकर कि ये नया फॉर्म. अबे भैया कहां से नया फॉर्म? तो आया ही नहीं था. फॉर्म तो आया ही इस साल है. लास्ट ईयर अप्लाई कर दिया. मैंने कहा कहां से अप्लाई कर दिया? कहता जी फॉर्म 10A निकाला, अप्लाई कर दिया. मैं कहा वैसे तो लास्ट डेट तक इंतजार करते रहते हो और फिर कहते हो एक्सटेंशन दे दो. और इस सर लास्ट टाइम कैसे कर दिया आपने अप्लाई? वो सर गलती हो गई. अब आपने अप्लाई कर दिया. सर उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वहां पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है. फॉर्म ने उसमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही नहीं है.
पुराने फॉर्म में 10A में, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन तो मिलना था, तो मैंने कहा आपने डाल कैसे दिया? और हमारे कंप्यूटर साहब देखिए, उन्हें सबको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया। वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिली। अब मेरे में सवाल है, सर आपने कहा था वो तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, ये प्रोविजनल कैसे मिल गई? मैंने कहा आपने कब अप्लाई किया? सर लास्ट ईयर कर दिया। मैं कहा कैसे कर दिया था? फॉर्म तो था ही नहीं 10A। वो सर 10A मैंने डाउनलोड किया और कर दिया। मैं कहा उस डाउनलोड में रजिस्ट्रेशन नंबर थी। सर किसने देखा? हमने तो भरा और कर दिया और वो प्रोविजनल मिल गया। ये गलत है। मैंने उनको भी बोला, डिपार्टमेंट को, ये आपने प्रोविजनल कैसे दे दिया? कह रहे सर गलती हो गई। मैंने कहा गलती? कहते गलती उनकी भी तो है, उन्हें फॉर्म 10A क्यों भरा? उनको रजिस्ट्रेशन था तो उनको बताना चाहिए था। हमें क्या पता उनका रजिस्ट्रेशन है? हमें क्या पता उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है? उन्होंने अप्लाई किया, हमने दे दिया प्रोविजनल। तो मैंने उन सबको बोला हुआ है कि अभी अप्लाई कर दो और इसको सरेंडर कर दो साथ में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो वैलिड होता है फॉर 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। वो तो आपका री रजिस्ट्रेशन है और जो 5 साल के लिए होना है। लेकिन कईयों ने गलती करी। अब कई ऐसे हैं सर, लास्ट टाइम पहली बार अप्लाई किया था, सुन लीजिए, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फॉर्म 10A पुराना ही करना था, वो तो करेक्ट है। लास्ट टाइम दे अप्लाइड, बिकॉज लास्ट टाइम दे अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। उनकी एप्लीकेशन 31 मार्च को अगर पेंडिंग है, तो मैंने सबको बोला था आपको दोबारा एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर अंदर 31 मई तक सबको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया। फर्स्ट टाइम करंट ईयर की बात नहीं कर रहा, दे अप्लाइड लास्ट ईयर फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। तब तो ये लॉ था नहीं, तब तो ओल्ड लॉ था। दे अप्लाइड इन फॉर्म 10A, but they never got registration. So I told them, don't worry, you don't have to apply once again. No, you will get provisional registration from back date. You will get it from back date, from last year. And you will apply for regular registration within 6 months of the commencement of charitable activity or before the expiry of 6 months before 6 months prior to the 3 years. They have to apply again for regular registration. सर रेगुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10A में नहीं है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10AB में है। 10AB रेगुलर रजिस्ट्रेशन किसने अप्लाई करनी है? जिसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करनी है, जब आप कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी कर। सो लास्ट ईयर जिनकी भी एप्लीकेशन पेंडिंग थी उनको इस साल प्रोविजनल मिल गया है। लास्ट ईयर अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई थी तो आपको दोबारा अप्लाई करना है। You have to apply again for re-registration or re-approval. ये क्लियर हो गया सर? ये क्लियर हो गया? तो किसने अप्लाई करना है? Either you have to apply for re-approval or re-registration. कब लास्ट डेट है? 31 अगस्त। कब तक आ जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन? 3 months में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, without asking any question. It will be given to you in form number 10AC. आ जाए। वेट, अभी अप्लाई नहीं किया तो आएगा कहां से? लेकिन एक और सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनिए, उसमें कॉलम है, वो लोग कह रहे हैं कि सर वो 3 साल के अकाउंट्स मांग रहा है, सर वो तो ये चीजें मांग रहा है। वो कुछ नहीं मांग रहा है। कई चीजें नए प्रोविजनल वालों के लिए भी फॉर्म 10A है, प्रोविजनल का भी फॉर्म 10A है, रेगुलर का भी फॉर्म 10A है, री रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म 10A है। तो अगर उसमें कॉलम देखिए तो उसमें 10A में पहला है पैन नंबर, वो तो सभी डाल देंगे। दूसरा है कोड नंबर, ये कोड जो है ना वो एक ही कोड डलेगा, एक से ज्यादा नहीं डलेगा। अब कोड क्या है जरा ध्यान से सुनिए। अगर इन सबको मैं कहूं जिन्होंने अभी तक नहीं फॉर्म फाइल किया है, तो फॉर्म 10A को हार्ड कॉपी डाउनलोड करना, हार्ड कॉपी, और उसके नीचे लिखा हुआ है कोड। देखिए आपने री रजिस्ट्रेशन के लिए करना है 12A में, तो कोड नंबर है 01, कोड नंबर है 01। आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए करना इस साल 12A में, तो कोड नंबर है 02। समझ में आ गया सर? री रजिस्ट्रेशन कोड 01, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कोड 02। जो 02 डालेगा उसको प्रोविजनल मिलेगी, जो 01 डालेगा उसको रेगुलर मिलेगी, पीरियड फॉर 5 ईयर। ये समझ में आ गया? यस सर। फिर जो 1023C में जाना चाहते हैं और IV में जाते हैं री अप्रूवल के लिए, 1023C सब क्लॉज IV री अप्रूवल के लिए उनका कोड है
03। जो 1023C में जाना चाहते हैं री अप्रूवल के लिए उनका कोड है 04। जो 1023CVI जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है और स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनका कोड है 05। और जो हॉस्पिटल वगैरह है और 5 करोड़ से ऊपर है उसका कोड है 06। ये तो री अप्रूवल के लिए, री अप्रूवल। उसके बाद कोड नंबर है जी 8, 9, 10, 11। ये फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए। 8 फॉर 1023CIB, 9 फॉर 1023CV, 10 फॉर 1023C 9, so 1023CVI and then VIA 10। उसके बाद 2 कोड और हैं सर, 11 और 12, 11 and 12। ये पता किसके हैं सर? ATG, री अप्रूवल अंडर ATG, कोड नंबर 11। फर्स्ट टाइम अप्रूवल अंडर ATG, कोड नंबर 12। ये कोड नंबर डालने हैं सर। वैसे तो और भी कोड है 13 से 19, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नहीं है, वो रिसर्च एसोसिएशन स्कूल कॉलेज फॉर रिसर्च एंड सोशल साइंसेज के लिए। वो 13 से 19 है। ये कोड डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी लिखा है। नेचर ऑफ एक्टिविटी में लिखा है वेदर चैरिटेबल, रिलीजियस, पार्टली चैरिटेबल, पार्टली रिलीजियस। वो नेचर ऑफ एक्टिविटी भी लिखा है कौन सी, वो डालनी है आपने, क्या आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी है। तो फिर लिखा है कि आप क्या आप यू हैव बीन क्रिएटेड बाय इंस्ट्रूमेंट अगर है, या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है आपकी, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, क्या नंबर है उसका, कौन सा है, ये सारी चीजें मांगी हुई 4 नंबर। 5 में लिखा हुआ है इज योर ट्रस्ट डीड इरिवोकेबल। अब देखिए संजीव जी, ये बात बड़ी अच्छी सुनिए। ट्रस्ट डीड में इरिवोकेबल वर्ड आना चाहिए, क्योंकि अगर रिवोकेबल है तो सेक्शन 61 लगता है, और चैरिटेबल ट्रस्ट तो हमेशा इरिवोकेबल होता है। लेकिन मैंने कहा आपने ये क्यों लिखा इज योर ट्रस्ट डीड रिवोकेबल और इरिवोकेबल? कहते क्यों? मैंने कहा जो पुराने आपने रजिस्ट्रेशन दे रखे हैं तब क्यों नहीं पूछा आपने? तब तो आपने पूछा नहीं। कहते चुप रहो चुप रहो। मैं व्हाट डू यू मीन भाई चुप रहो? आपने तब नहीं पूछा तो अब कैसे कहते हैं लिख के दो कि ट्रस्ट डीड इरिवोकेबल? ट्रस्ट के बारे में पूछते हैं सोसाइटी में नहीं, सेक्शन 8 में नहीं, ट्रस्ट इरिवोकेबल होना चाहिए। मैं कहा वो तो रूल है कि ट्रस्ट इरिवोकेबल होना चाहिए, नहीं तो सेक्शन 61 लग जाता है। आपने पहले क्यों नहीं देखा? ये आज को देख रहे हो 61 तक। कहते गलती हो गई। मैंने कहा फिर क्या करें? जिसका नहीं लिखा हुआ ना वो एक रेजोल्यूशन पास करके अभी तो साथ में लगा दे और बाद में ट्रस्ट डीड ठीक कर ले, बाद में ट्रस्ट डीड ठीक करा ले रजिस्ट्रार के पास जाकर। वो इरिवोकेबल होना लिखना जरूरी है, बाकियों के लिए नहीं है। फिर उन्होंने बाकी डिटेलें मांगी है कि आप उस पोर्टल में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो सब डिटेलें वो भरते। मैं एक पॉइंट और बता, आइटम नंबर 10 में लिखा हुआ है हैव यू फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर विच द टाइम पीरियड इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। अभी तक कौन से असेसमेंट ईयर की टाइम पीरियड पर एक्सपायर्ड हुआ हुआ है? अभी तो 20-21 का तो गया ही नहीं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट कौन सा जा रहा है? 21-22 का कहीं गया? अभी 20-21 का गया है, 21-22 को तो अभी गया नहीं। तो 20-21 की अगर आपने रिटर्न भर दी हुई है, वो तो डायरेक्ट निकल चुकी है बहुत पहले, तो उस केस में आपको कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लगना, वो अपने आप ग्रे हो जाएगा। व्हेन यू राइट यस, सारे कॉलम नीचे वाले ग्रे हो जाए। नहीं तो आपको 3 साल की, पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ऑडिट रिपोर्ट और सब कुछ लगाना है। लेकिन इफ यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न ऑफ द पास्ट 3 इयर्स तो आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लगानी। अगर आप लिख देंगे यस, लोगों को यही आ रहा है कि सर 3 साल की मांग रहा है। मेरे ऑफिस में भी रवि जी भर रहे थे, आ गए मेरे पास 3 साल की ये कर दो। मैं कहा किसने कहा? कहता जी हमें भरना थोड़ी आता है, वो तो स्टाफ भर रहा है। मैं कहा रुक जाओ, उनको कहना वहां यस लिखे तो वो मांगेगा नहीं मांगेगा नहीं। हाँ, अगर आपने रिटर्न भरी नहीं हुई तो जरूर मांगेगा, रिटर्न भरी नहीं हुई जरूर, या फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और पुराने सालों से ट्रस्ट चल रहा है तो भी मांगेगा। इफ यू आर आस्किंग फॉर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन बट यू आर देयर फॉर सेवरल ईयर्स तो भी मांगेगा अपने 3 साल के अकाउंट। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है ना और पुराने सालों का है, वो तो समझो मर गया, उसको तो 56(2)(10) लग चुका है, उसकी तो पूरी इनकम टैक्स हो चुकी है अगर वो रजिस्ट्रेशन उसके पास नहीं है।
क्योंकि 56(2)(10 कहता है डोनेशन 50,000 से ज्यादा इन एग्रीगेट है, वेदर फ्रॉम 1 और मोर देन 1%, वो जब तक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के पास नहीं आएगी फुल्ली टैक्स। और कई मंदिर, गुरुद्वारे, चैरिटेबल ट्रस्ट दे आर नॉट रजिस्टर्ड, सबके सब फंस जाएंगे। फर्स्ट टाइम अभी रजिस्ट्रेशन तो ले लो, नहीं तो पिछली तो जो होगा होगा, आगे से तो बच जाओ। ये अब कोई क्वेश्चन है तो सब पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। Yes, sir. So there is one question, sir, which is 5 questions. I'll quickly read the first one. This audit report in Form 10B was not filed along with the return of assessment year 18-19. However, it was filed in the course of assessment proceedings. Gone are the days. Earlier, the days were different. You could file at the time of assessment also. Now, if the report has to be filed before filing a return, otherwise you will not be given exemption. Sir, one person has filed return at 12 o'clock and he filed audit report at the 6 o'clock in the evening. He also got a notice. You have to file before furnishing the return of income. Okay. Very true, very clear, I'm telling you. So his question was that NSE has not granted registration and has taxed the net income. Condonation सर, application. ये लोग जो सोचते हैं ना कि नेट इनकम टैक्सेबल होगी खर्चे के बाद, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप एक मंदिर के पास डोनेशन आ रही है, चाहे वो सारा पैसा खर्च कर दे, पूरी इनकम, पूरी ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल है। 56(2)(10 डज नॉट अलाउ यू एनी डिडक्शन। 56(2)(10 डज नॉट अलाउ। वो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं जब 56(2)(10 नहीं था। प्रायर टू 1 April 2017 व्हेन 56(2)(10 वाज नॉट देयर, तब तक तो ये अलाउड था कि खर्चे के बाद वाली इनकम टैक्स करते थे। 1/4/2017 में अब लिखा एनी पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन, तो उस केस में ट्रस्ट भी कवर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है और डोनेशन एग्रीगेट 50,000 से ऊपर है तो इंटायर ग्रॉस रिसीट विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ दैट ट्रस्ट। ये भी बता दो। Second question is, do we need to maintain corpus fund in a separate bank account? I think you said yes. Separate bank Now, account. yes, because I've told you, कॉर्पस फंड से करेंगे वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है। और कॉर्पस फंड को अलग रखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट का मतलब खाता अलग खोलना पड़ेगा उसका। बिल्कुल, दो खोला, एक ही में वो 2 सेविंग नहीं खोलते तो दूसरी जगह खोलो, दूसरी ब्रांच में खोलो, लेकिन खोलना पड़ेगा। Next question is whether basic exemption available to a registered charitable trust under 12A. Yes, certainly. 2,50,000 available. If gross receipts, provided you have not committed any default. Section 164 subsection 2 में कुछ default हैं. If you are, then you will not get exemption. Otherwise, you will get exemption of 2,50,000. So his question is, if the gross receipts before its application is less than 2.5 lakhs, is the trust still liable to file the return of income? अब इनसे देखिए, before claiming exemption, you have to file return. You have to file return before claiming exemption under 1112, provided it is more than 250. लेकिन यार ये क्या है, 2.5 लाख के बारे में क्या सवाल पूछते हैं, क्या कर लेगी सरकार भी उनको, और बड़ी बड़ी बातें करा करो यार। ये छोटे छोटे 50,000 ट्रस्ट की बातें मेरे से क्यों पूछते हो, ना करो, कुछ नहीं होगा। The application of income, when the application for the charitable purpose is made out of borrowings in year 1 and in year 2, the borrowings are repaid out of the fresh borrowings, and in year 5, the fresh borrowings are repaid out of income. In which Hey year? Ram, hey Ram, when you are paying the money, you are paying the money out of the current income. Where is the income? It should be applied from the income. Borrowing is not an income. Sir, borrowing is not an income. जो ग्रॉस रेट आएगी उसी को तो रीपे करना है, बोरिंग से कहां से हो जाएगा? बोरिंग इज नॉट एन इनकम, वो अगले साल की एप्लीकेशन ही नहीं है, अगली बोरिंग भी इनकम कहां है? तो ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। In the above case, he says the application of fund is made out of borrowings in year 1 and year 2. The borrowings are repaid out of corpus donation, and in year 5, the corpus funds are returned out of current year income. In which year there is application of fund? So why are they making the thing so complicated, sir? कॉर्पस को जो आप यूज करते हैं वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता। आपको करंट इनकम को आपने कॉर्पस से जो खर्च किया उसको हमने करंट ईयर एप्लीकेशन नहीं माना, लेकिन वो जब कॉर्पस में रीफिल करेंगे तो एप्लीकेशन मान लेंगे। कर लो वो भैया, तुमने जो करना है सर।
And so this you already answered. He says Form 10 has still glitches despite filing grievances. No response has been received. Is there any chances of extending the form? I think you answered this depending on the portal workable or not. Correct. Correct. You already answered that. The last question here is, sir, my client is already registered under the income tax law, filed return of income till March 2020. However, when filing Form 10A, it is asking for details of assets and liabilities and income. नहीं मांगेगा, Change. नहीं मांगेगा. वो प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्म अभी जो पोर्टल में डिफिकल्टी आ रही है वो ठीक हो गई होगी. नहीं, पहले तो असेसमेंट ईयर ही गलत आ रहा था. पहले तो असेसमेंट ईयर ही गलत आ रहा था उसमें पोर्टल में, तो इसलिए नहीं मांगेगा. प्रोवाइडेड यू हैव फाइल्ड द रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021. 31 मार्च 21 वाली रिटर्न भर दी गई है. वही होगी ना? Yes, sir. That is the 21 last की नहीं, return. 20 की. 21 की तभी गई नहीं. 21 21 की तभी गई नहीं. 31 मार्च 20 की रिटर्न. Yeah. So there was one question from, I think, in the chat also. When we say that the corpus fund needs to be maintained separately, do we need to maintain corpus fund in a separate? This you already answered. 5 crore each school also you already answered. No, not each school, per No. trust. Per trust. He says his question was, sir, is 5 crore for each school in a society or total of all schools in a society? And you said Total all school in society. One society 5 crore. can foreign university take benefit under section 1023C? देखिए, the point is application has to be done in India. Then only you get a benefit. You can't get a benefit for spending the money outside India. So if that, क्या कहता है 11(1)? The following income of the trust shall not be included. That is any income of a charitable religious trust, which is for charitable religious purposes to the extent it is in income is applied in India. If there is any income set apart or accumulated, so much of the income set apart or accumulated which does not exceed 15%. हर जगह word India है. India में apply करेंगे तो outside India नहीं. This is slightly longer question. It says 5 years back, trust collected money as education fund, rupees 30 lakhs to help school. Since last 2 years, the school is not responding. Hence, no help is given to school out of interest on rupees 30 lakhs. Now, the trust want to use the said full amount of 30 lakhs for the purchase of machinery to be donated to a hospital. Is it allowed? What procedure to be followed? First point I'll tell you. Number 1 point, let me tell you, if you have accumulated any fund, the donation out of the giving to any fund to other fund is not treated as application. It will not be treated as application. Accumulate, you can give donation to other fund out of the current income. If you want to give out of the accumulated income, it will not be treated as application. You can give it, but it will not be treated as application. And second point, ये ध्यान रखिए, जो बड़ा क्लियर कर दूं, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस फंड के लिए देगा तो आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी. You cannot give for corpus fund of other trust out of the current. हाँ, कॉर्पस से कॉर्पस दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करंट इनकम से कॉर्पस फंड में नहीं दे सकते दूसरे ट्रस्ट. यू कैनॉट गिव. अगर देंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा. उसका चाहे वो कॉर्पस मान लिया जाएगा, आपके ऊपर टैक्स देना है. Educational institute registered under 12AA for assessment year 21-22 also, it is covered under 1023C 3AB. For the claim under section 1023C 3AB, am I required to surrender registration under 12AA? Today, now onwards, from 1st April 21 onwards. Earlier it was not. Now you can keep only one. So we have filed return but have not been processed. Then also we are not able to select the filed return. I think this is the portal problem actually. The portal issue is. If trust is running school but not received 12A registration, whether income of trust will be taxable under section 56 to 10? If they get donation. If they get donation. Otherwise, let them be a commercial school, private school, commercial on commercial lines, farm 5 भर दीजिए, वो अलग बात है. डोनेशन नहीं ले सकते, because 56 to 10 square, any amount received without consideration. That is without consideration.
और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये तो फीस अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे फीस ले रहे हैं, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी तो यही करता है, तो वो तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, कर लीजिए, फॉर्म 5 में जाइए। Prakash, you want to take up all the questions remaining? Prakash? Yes, sir. Yes, sir. There's one question, sir. As you have discussed, sir, that in the case of the 1023C, the AO makes the report and submits the report to the commissioner, whether and with recommendation that with the recommendation that the registration should be cancelled or the approval should not be given into this part here. No, it should be withdrawn. Its approval should be withdrawn here. So the point is that there, whether this report of the AO is appealable before any forum, or whether we have to wait. Please no. He has submitted a report to the commissioner exemption. You have been given an opportunity of being heard. You have been given an opportunity of being heard, and then he has withdrawn your approval. Then you can go against the withdrawal of approval to the ITAT. But that is the withdrawal approval to ITAT. That is the order of withdrawal. But otherwise, they assess you. The another situation arises when the commissioner does not withdraw based on the report of the assessing officer, whether the department can move to the higher. No question. No question. No question. Okay. That is binding on the assessing officer, because the person who has given an exemption, he has said that it is all right. So no question. Okay, sir. This was the only issue, sir, which I wanted to tell. Can you proceed? Okay. Yes, now, one thing I have told you very clearly, that out of the accumulated money, if you want to donate for a corpus, it is not allowed. But if there is a corpus, out of corpus, you want to give it, we have no problem. We have no problem. But it should be given to registered trust. But current income, you can donate to other trust for current purposes, not for corpus. Not for corpus. Next point. In the case of trust, you already know section 40A IA and 48 subsection 3 are applicable. Mutatis mutandis, which are applicable for commercial institution, here applicable. What is 40A IA? You have to deduct TDS and deposit the TDS before due date of filing the return of income. And if you do not, you deduct but do not deposit before the due date of return, or you deduct not in that year, then that 30% of that amount shall be disallowed. That is in commercial sale. Here, 30% of that amount will be treated as non-application. 30% of the amount will be treated as not application. You have applied 100%, but you have not deducted TDS, or deducted TDS not deposited. Then 30% of the application amount shall be treated as not applied, or disallow kar denge us charitable trust. 40A3, payment of an expenditure exceeds rupees 10,000. That should be made by account pay check, account pay draft, or through electronic clearing system, or through bank. Here also in charitable trust, payment in a day exceeds 10,000 rupees to a person. It has to be made by account pay check or account pay draft. Otherwise, it will not be allowed as application. That payment may be in revenue expenditure or maybe capital expenditure, does not make any difference. The payment should not, if exceeds rupees 10,000 in a day, should be made by the account pay check or account pay draft, failing which it will not be allowed to you. Clear, sir? Yes. But I was coming to 10A. After 10A, I have to do a lot of other things also. So, sir, you have applied under 10A. If you are under 1023C, you have to apply for approval. If you are under 12A, you have to apply for registration. The form is same 10A. If you want to apply for, you have already got ATG, then you have to apply under form 10A by putting code number 11 for reapproval of ATG certificate, for reapproval of ATG. If you are going for first time approval, you have to put code 12 and you again have to apply under form number 10A. 10A या तो re-registration reapproval का है या reapproval of ATG का है या fresh approval of ATG का है. जहां भी fresh approval होगी वह provisional मिलेगा, valid for a period of 3 years. Or you have to apply for regular approval within
6 months of the commencement of charitable activity or before the expiry of at least 6 months prior to the expiry of period of 3 years. अब और सुन लीजिए सर, जो ये ट्रस्टों को डोनेशन मिलेगी जिनके पास 80G है, उनको हर साल 10BD में एक स्टेटमेंट फाइल करनी है by 31st May 22 and every year by 31st May. सर जो टोटल डोनेशन आएंगी 80G वाले जिनके पास सर्टिफिकेट है, उन सबको एक ईयरली स्टेटमेंट फाइल करनी है of the amount of donation received, name of the person, PAN number, date, check number, amount, donation. ये सब डिटेल फाइल करनी है फॉर्म नंबर 10BD में, और साथ ही में उनको एक सर्टिफिकेट इशू करना है जिसने डोनर को अंडर फॉर्म नंबर 10BE, सर्टिफिकेट अंडर 10BE, ईयरली स्टेटमेंट ऑफ donation received under form number 10BD, which has to be filed not this year, current year's 21-22 will be filed on 31st May and in future every 31st May. अगर वो फाइल नहीं करेंगे, आप जो डोनर है उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी और ये ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा डोनर की रिटर्न. अगर ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हुआ तो डोनर को डिडक्शन नहीं मिलेगी. So please be careful. 10BD is compulsory, and if you file 10BD delay, 200 rupees per day will be the fee for late filing of 10BD. ये भी आपको बता दूं. अब आया, अब ध्यान से सुनिए, एक फॉर्म 10AB भी है. ये पहले जो आप अप्लाई करेंगे, ये री रजिस्ट्रेशन, ये 3 महीने में आपके पास आ जाएगा. 3 months time it will take. No question will be asked. But later on, if any column is not filled up, or if you have not submitted the documents properly, then they can cancel 10AC also. They can cancel 10AC also. But coming back, once you got a provisional registration and you have started the charitable activity, then within 6 months of commencement of charitable activity, and if you have not started at least 6 months before the expiry of 3 years, you will have to apply for regular registration, and regular registration has to be applied under 10AB. 10AB. Please note the word 10AB. और जो री रजिस्ट्रेशन जिसको मिल रहा है वो वैलिड 5 years का है, उनको भी at least 6 months prior to the expiry of the 5 year, they will have to apply for renewal of registration. A renewal का फॉर्म भी 10AB है. फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो फॉर्म 10AB. वो तब भरेंगे कब? अभी तो 10A भरना है जब 5 साल कंप्लीट होने वाले होंगे. 6 महीने पहले, एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 5 year, यू विल हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे फॉर्म 10AB. अभी एक और बात, सपोज आपके पास रजिस्ट्रेशन है बट यू हैव मॉडिफाइड योर ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन कंसर्न टू व्हाट यू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर. उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है विद इन 30 days ड्यू अंडर फॉर्म नंबर 10AB. So if the objects are changed, you'll have to apply for fresh registration, even if you are already registered under form 10AB, because you have modified the object. That application has to be made within 1 month of from the end of the month in which modification is done. एक और है 10AB का. सर 3 हो गए. एक तो हो गया रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक हो गया रेगुलर रजिस्ट्रेशन आफ्टर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, एक हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब एक और है, आपके पास दोनों फॉर्म थे, दोनों अप्रूवल भी थे और रजिस्ट्रेशन भी थे. आपने रजिस्ट्रेशन ले ली, अप्रूवल नहीं ली, तो वो अबेंस में आपने सॉरी अप्रूव 1023C में चले. लेकिन अब आप कहते हैं गलत हो गया, मुझे तो रजिस्ट्रेशन में जाना था, तो वो उसको इनऑपरेटिव कर देंगे. एंड यू वांट टू मेक इट ऑपरेटिव, यू विल हैव टू अप्लाई अंडर फॉर्म नंबर 10AB. You will surrender 1023C approval and you will apply for approval under 10AB form for in making the inoperative registration, making it operative. ये सारे फॉर्म है. अब इसमें जो भी क्वेरीज इनसे पास हैं ये पूछ सकते हैं, जो भी इनफॉर्म ने क्वेरी पूछनी है ये पूछ सकते हैं. दर्पण, हाँ
Sir, in the case of the Form 10A, there are a lot of codes, sir, like 01, 02. And मैंने बता तो दिए सारे 12 के 12 कोड बता दिए आपको. Yes, sir. अब एक चीज और बता दो, अगर Yes, sir. आपको री रजिस्ट्रेशन करानी है और एटीजी के लिए जाना है, अलग अलग फॉर्म भरने पड़े. Okay. होंगे दोनों 10A, बट हाँ. वहां कोड 01 होगा, वहां कोड 11 होगा. मैंने 12 कोड बताए हैं सर. आई हैव टोल्ड यू 12 कोड एंड इट्स स्टिल नॉट क्लियर. काइंडली डाउनलोड फॉर्म 10A and you will find all instruction given there and all code number given there, right from 01 to 19 code. But for you, the important is 01 to 12, 01 to 12, 01, 02, 03, 04. I've given you all details of them. अगर और सर कोड अगर कोड डालने में कोई गलती हो जाती है तो if गए there is आप. तो क्या तो करूं, रिवीजन के लिए कोई लिखा नहीं है, लेकिन ट्राई कर लीजिए. लेकिन हाँ. गलती नहीं है, इन्होंने गलती की है. मेरे को कई क्वेश्चन, मेरे कई फोन आ चुके हैं, सर गलती से डाल दिया. अरे गलती से क्या डाल दिया आपने, ध्यान से तो देखो क्या करने हैं. लेकिन हो सकता है ट्राई कर लीजिए, नहीं तो हेल्पलाइन से बात कीजिए. लेकिन मुझे लगता है रिवीजन शायद हो सके तो कर दीजिए, क्योंकि वो फ्रेश एप्लीकेशन लेता नहीं है. एक बार आप अप्लाई कर दीजिए तो वो वहां पर ब्लॉक हो जाता है. यू कैन नॉट अप्लाई अगेन. Sir, another issue is on the issue of the recoverable or irrevocable of the trust, sir, because बहुत सारे मैंने trust बोला जो ना हैं, सर, ये उनकी भी गलती है हाँ. कि पहले उन्होंने आज तक नहीं लिया. तो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट तो आप कैसे पूछ सकते हैं, न्यू ट्रस्ट का तो पूछ सकते हैं, रिवोकेबल होना चाहिए. पुराने ट्रस्ट बने हुए हैं और आपने आज तक तो आपको रजिस्ट्रेशन देते रहे. अब सडनली आपको क्या हो गया कि आप रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है. तो मैंने ये कहा था, टाइम बीइंग ट्रस्टी एक रेजोल्यूशन पास करके, अगर ऑथर हो तो बहुत ही अच्छा है, उसको इरिवोकेबल लिख के रेजोल्यूशन पास कर दे और बाद में ट्रस्ट डीड में जाकर अमेंडमेंट करा लें. कुछ ज्यादा काम नहीं है. वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो होती है वहीं इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, वहां जाके करा लें. और फिर बाद में because this question is from the Bombay here, sir, and Bombे में प्रॉब्लम ये आ जो रही है पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है वहां पर, हाँ इन बॉम्बे बॉम्बे देयर में इज अ पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट, दे कुड हाँ. गो देयर एंड गेट इट चेंज. Okay, sir. वहां इजी है रादर. Sir, another But issue is that I'm really surprised. I am really surprised that if it is a charitable thing, it cannot be revocable. It is not possible. It is for public at large. ये तो पागलों वाली बातें कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि सेक्शन 61 कहता है रिवोकेबल ट्रांसफर, इसलिए उनको आया दिमाग में. लेकिन पहले क्या किया था, इतने सालों की आपने हमने ट्रस्ट डीड दे रखी है. Why did you point out earlier? So they cannot take very serious action against it for the time being. अब यही करिए, ट्रस्ट डीड चेंज करके और एक रेजोल्यूशन पास करके दे दीजिए. बॉम्बे वाले तो पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट में जाकर करा दीजिए, उनका एक्ट में है. देयर इज अ चैरिटी कमिश्नर देयर, द चैरिटी कमिश्नर विल डू इट. another issue is, sir, like you have told that if there is a modification in the object of the trust here, so we Correct. have to again file the Form 10A. 10AB, So- no A, AB. Okay. Modification is a new thing again. So this means provisional के बाद अगर 10AB में हमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फाइल करनी पड़ेगी for the purpose of that. बिल्कुल, हाँ. as if it is a fresh registration. Sir, another issue is that in the case of the अगर दोनों रजिस्ट्रेशन है पुराने और रजिस्ट्रेशन भी है और अप्रूवल भी है, रजिस्ट्रेशन अंडर 12A and अप्रूवल अंडर 80G, and now I want to opt for the अरे वो तो you have to opt for one like 12A. सर 80G को आपने नहीं करना, मत अप्लाई करिए, खत्म हो जाएगा. हाँ. लेकिन नहीं, I'm talk- 12A वाले तो 80G करते ही हैं. अगर आपके पास 12A नहीं है तो 80G तो मिलता ही नहीं है. I'm talking about, sir, 12A and 23C, sir. 12, I have the 12A and 23C. you have to decide one. Yes. Under 1023C you can get 80G. Okay, Allowed. sir. Allowed 80G. But for that you have to fill up code number different. But allowed. Under 1023C also allowed 80G. Under 12A also allowed 80G. Okay, sir. Unless you are registered or approved under this, you cannot get 80G at all. Sir, another question has come on the portal, sir. Like form number 10AB is not available on the portal. Time limit for filing has expired. How to apply it? Where is the time limit for 10AB so far? Because कौन yes, सा sir. की जरूरत है?
अभी तो आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन के बाद आप कब करेंगे? अरे सर 10AB किसके लिए है? एक तो मिला है जब आपको प्रोविजनल मिल गया तब 10AB है, यस सर, वो 6 months के अंदर टाइम में अप्लाई करना है, नंबर 1। यहाँ आपको 5 साल के बाद रिन्यूअल कराना है, या फिर मॉडिफिकेशन करके बाद दोबारा करना है, या फिर आपको इनऑपरेटिव को ऑपरेटिव करना है, वो तो बाद में होगा। अभी 10AB की जरूरत ही नहीं थी, अभी तो जरूरत ही नहीं है 10AB की, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए 10AB को एक्टिव नहीं किया उन्होंने। उसके बाद Okay, I can ask सर one question came. Just yes. one question came. I'll just ask, then you can come back to you. So the question which I got is again from someone. As per section 11(2), amount can be accumulated for a maximum period of 5 years. हाँ जी, Not utilized during the period of say 5 years or in the immediately following the expiry, it would be treated as an income for the year 6 because we are not. आप 6 year में भी अप्लाई कर सकते हैं। Okay. 5 year plus 1 year, 6 Okay. year की इनकम तभी मानी जाएगी जब अप्लाई नहीं करोगे तो। So 1 ठीक year है। extra is given, and if you Okay. are not doing 6th year तो आप दोबारा 15 नहीं कर सकते। ये सोच रहे हो उसका भी 15 कर दूं? अरे सर ये मत करो। नहीं। ये So the question is, अरे ना वो जितने 85 आपने जितना एक्यूमुलेट किया था वो आपको आपकी इनकम मान ली जाएगी, उसका 15% नहीं मिलेगा। ठीक है। So his question was, sir, the interpretation is that the accumulated amount can be utilized for the purpose in year 6. However, the return form does not seem to be giving the option for the 6th year utilization as of now. ऐसा नहीं है आपका 10B फॉर्म दिखाता है, 10B जब भरते हैं उसमें कर देते हैं तो अपने आप वो एप्लीकेशन मान लिया जाता है, आप एप्लीकेशन में डाल देते हैं उसका। Okay, and you were saying the further would the unutilized amount be taxable income, or the amount once treated as income can be utilized for other objects of the trust? No, you can't apply for the other object of the trust. It will be treated as an income. Unless you get the object gain, you cannot apply for other trust, other object. ठीक है। तो पर्पस ही खत्म हो गया फिर तो। One question is, what is expected for a bank account where they are saying indicate account used for digital receipts and payments? A trust has not taken online payment facility. However, for receipts, direct donation can be received from donors. So what is meant by this? That indicate account used for digital receipt and payments. सर यूज्ड फॉर डिजिटल, अभी आपने अकाउंट नंबर डाल दो, अभी डिजिटल शुरू किया नहीं है तो क्या हो गया? अभी डिजिटल तो आप ले सकते हैं ना, लेकिन अकाउंट नंबर डाल दीजिए। अभी आगे से उनका पॉइंट ये है कि कुछ पेमेंटें जब आपको आने लगेंगी, क्योंकि हम वी आर एक्सपेक्टिंग यू दैट यू शुड डू डिजिटल अकाउंटिंग, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं अभी। sir, yes sir, one question is there sir, from the Bombay. It is again from the Bombay. If the registration certificate given by the Bombay Charitable Trust is lost, what are the process should be followed? Sir, my point is registration certificate is lost from public welfare trust, not the registration certificate of income tax. Am I right? Yes sir. Sir, I am not from Bombay. You will have to apply for charity commissioner to Okay, to get it to get a new one. That must be a procedure there. I am not from Delhi, so I don't know what kind of a procedure is followed under Public Welfare Trust of Bombay. But I think you can always apply for a reissue of the registration certificate when it is lost. होगा कोई necessary fees होगी और वो आप कर सकते होंगे. I have no knowledge how to make an application there. This is not the income tax. This is to do with the Public Welfare Trust. Okay. It is again one same question, sir. 12A registration given by the department, income tax department, is not traceable. Right now, what to do, sir? Earlier, you have a registration number. You have been following the return. You have been following the return. Yes, yes. You have got a registration number. Yes, sir. Repeat. Put their registration number, and then you put a comment not traceable, because you go to the department. If you are able to get it from there. Otherwise, you make a try to go to the department, get the copy. 99% you will not get the copy. You can say not try it, not traceable. But registration number is there. Put their registration. Okay, sir. They will give you. और बाद में आप जाकर जब वो AC आएगा ना, उसमें आपको शो कॉज दिया जाएगा, तब प्रोड्यूस करना. Okay, sir. There is another question from Mr. Saurabh. He says that, sir, kindly enlighten us about the 20% commercial income exempt from the tax criteria of the 12A registered trust charitable institution. That is advancement of any other object of general public utility.
Yes, sir. There is a charitable purpose given under section 10 clause 215. Section 2 clause 15, which says charitable purpose include relief to the poor, number one. Number two, education. Number Yes, three, sir. yoga. Number four, medical relief. Number five, environment, preservation of environment, including watershed, forest, wildlife, preservation of monumental places, and last है any other object of general public utility. फिर उसके नीचे proviso लिखा है any other, provided that any other object of public utility will not be called a charitable purpose if it carries on an activity of carrying on any business, commerce, or rendering service to any trade, commerce or business. फिर उसके बाद फिर further provided that कि if it does not exceed 20% of the gross, it will be still called charitable purpose. तो 20% से ज्यादा नहीं है तो चैरिटेबल पर्पस होगा. अगर 20 से ज्यादा हो गई ग्रॉस रिसीट तो फिर उस साल आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. ये Okay, sir. We can proceed, sir, for the another part here, sir. एक और प्रोसीड में बता रहा हूँ, ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं, इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर 12A, देयर इज सेक्शन 11(4)A that you can do business which is incidental to the attainment of the objective of the trust, and separate account should be maintained that business. एक ट्रस्ट बिजनेस कर सकता है, but you will have to maintain a separate accounts and get them audited. और वो ऑडिटेड ये भी होगा और उसका टैक्स ऑडिट भी हो सकता है अगर वो टैक्स ऑडिट की लिमिट से ज्यादा हो. अब एक स्कूल है, कैंटीन चला रहा है, एक हॉस्पिटल है, एक डिस्पेंसरी चला रहा है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, ये कर सकते हैं. जो देखिए जो पहले 7 में कवर्ड है ना, वो कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट. लेकिन जो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में कवर्ड है वो कमर्शियल एक्टिविटी 20% कर सकते हैं. लेकिन जो रिलीफ टू द पुअर है, एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ है, योगा है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है और प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट है, दे कैन डू इवन बिजनेस, दे कैन डू बिजनेस which should be incidental to the attainment of the objective of the trust, and separate account should be maintained. और उसको आप करके उसकी इनकम का जो सरप्लस आएगा वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए जैसे नॉर्मली सबको करते हैं. So a trust can carry on a business also, no restriction at all. Same is the case under 1023C. A school college can also do. देखो किताबें बेचते हैं, यूनिफॉर्म सेल करते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, बुक्स बेचते हैं, ये कैंटीन चलाते हैं. They are all incidental. This is not the main business of the educational institution. So Yes, incidental to the attainment of the objective of the trust, they will be allowed. They will be allowed. So under Maybe 11(4)A. Aji? Under 1023C, there is no limit, sir, like in the case of the 11. No, not at all. No limit. 1023C, IV, VI, VIA. इसमें लिमिट किस चीज की लिमिट कह रहे हैं? No limit for the purpose of the undertaking the business, sir. Business की जो है जैसे हमने डिस्कस किया. ना कोई लिमिट नहीं है, वो वही वाला जैसे 12A में है, 4A. Okay, sir. 11(4)A जैसा ही. You can do, but they should be incidental to the attainment of the objective of the trust, and separate account should have been maintained. एक और चीज बता दूं, जो 11(2) में आप एक्यूमुलेट करते हो 15%, सर उसका फॉर्म 10 जो है आपको ड्यू डेट से पहले भरना है. एंड इफ यू डोंट फाइल बिफोर द ड्यू डेट यू विल नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ 11(2) एग्जेम्पशन जो मोर देन 15%. लेकिन 1023C में फॉर्म 10A के बारे में कुछ लिखा ही नहीं. They have just written that if you want to accumulate more than 15%, it should be accumulated in a mode given under 11(5). वहां फॉर्म 10 नहीं लिखा है. फॉर्म 10 12A के लिए है. Please note, if you are registered under 11(12) and you are going to take exemption, then in that case, if you want to accumulate more than 15%, you will have to file a Form 10 electronically before the due date of return, failing which the accumulation will not be allowed as exemption. Clear? Agree, sir. क्योंकि लोग 3 चलतियां कर रहे हैं. अब रिटर्न एक भी दिन डिले कर देंगे, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी उस साल. अगर फॉर्म 9A बिफोर ड्यू डेट बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न से नहीं करेंगे, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. और फॉर्म 10 अगर आपने ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न से पहले नहीं फाइल किया तो भी आपको वो 10 वैलिड नहीं होगा. फॉर्म 10 एग्जेम्पशन मिलेगी लेकिन वो अबव 15% की नहीं मिलेगी.
Sir, one question on this. Aren't there any judicial precedents where they may have taken a position that someone probably had reasons and he could not file the form, and technically, I think there was a पहले judgment. जमाने में था सर, अब हाँ. आ चुका है. No deduction will be allowed. तो लेवल 13.7 में भी डाल दिया, लेवल 7 में भी डाल दिया. They said 13.7 में लिख दिया है, no exemption will be allowed if the return is not filed before the due date specified under 139(1), or if form 9A is not filed before the filing of the return, or form 10. एक दिन भी डिले होगा, नहीं देंगे, ये क्लियर हो चुका है. और कईयों ने बहुत गलतियां कर चुके हैं. पुराने जमाने में अलाउड था. Even at the time of assessment, even at the time of reassessment, people have done a form 10. Right. Thank you. और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का जो पूछना पूछ लीजिए. Sir, there are questions, sir. Here. First question is that under the CSR rule amendment in the January 21, only 12A registered trust or Section 25 company can be CSR agency. Section 25 नहीं 8. They are required to register themselves from the with ROC. MCA, they have to register under MCA. Can 1023C registered trust not having 12A registration qualify for the CSR? Sir, at this moment, I would say no. Because the language very clearly says they should be registered under 12A. Okay. Then they go for CSR. And CSR also, you have to give a project and you have to monitor that project. It is not that easy now. वो जमाने चले गए जो हमारे यहाँ बड़े लोग बहुत तेज हैं. ये मैंने पहली बार दान देते देखा है कि दान देकर पैसे वापस ले लेते. ऐसा दानी तो मैंने पहली बार इंडिया में ही देखा है कि ATG में भी ध्यान देके पैसे वापस ले लेते. ये दानी मैंने ऐसे नहीं देखे हैं. और अब CSR में भी अब ये होने वाला नहीं. They are becoming very strict, and let me tell you, please do not take that trouble and don't tell them, your client, that they can come out of it by not spending the money on CSR. Please don't do that. Please don't do that. I'm telling you, you will have tough time for that. चलिए. Sir, another question is that रहता हूँ. पहले जमाने में कह देता था कुछ भी कर लीजिए. अब जमाना डिजिटल है. Everything, every information is available with them. मैं बता रहा हूँ, मुश्किल पड़ जाएगी उसकी. Do not try to do this thing कि CSR activity उसके पास 12A रजिस्टर होनी चाहिए, ATG होना चाहिए और MCA में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. ये सारी कंडीशंस हैं. 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड के बाद आपको उसको प्रोजेक्ट बना के देना चाहिए. प्रोजेक्ट की वो MIS देता रहेगा. ये सारी एक्टिविटी है. फिर भी कई CA कहते हैं हम करवा देंगे. भैया उनसे करवा लो. हाथ जोड़कर विनती है, NCA से जरा दूर रहना. मैं तो बहुत ओपनली कहने लग गया हूँ, हमारा नाम बदनाम मत करो. हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करके CA पास की, सबने. We really have worked very hard and we are not meant for doing wrong activities. Why should we involve ourselves in such activities? हम नहीं करेंगे. कम कमा लेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे. मैं ठीक कह रहा हूँ संजीव चौधरी सर? Absolutely, sir. बिल्कुल sir. 200%. Absolutely. और Sir, I have one question. It is a capital gains and the disclosure under 11(1)(a). That's the question. Sir, this is a myth. 11(1)(a) means you have to apply this money for another asset. But do not take FDR. Some people say, if I take a FDR of 6 months, will it be allowed? Sir, this is the old, very, very old, 15-year, 20 years old circular where they said you could do it by keeping in 6 months. No question. You have to buy an asset. Then only you get it. FDR is not an asset for the purpose of capital gain. मैं पहले बता दूं, वो पुराने जमाने के लॉ बदल चुके हैं. You can do 11(1)(a. उसमें क्या होता है कि जितना आपने कमाया उसके आप, if you buy the another asset, that can be treated as application. तो कर लीजिए. 11(a) ना भी करो तो भी उसकी जितनी टोटल आएगी उसको अप्लाई कर दीजिए, आपको 11(1) में मिल जाएगा. 11(1) में भी तो मिलता है. What is so special about 11(1)(a)? The only special people are talking about that I can put it in FDR for 6 months minimum. I don't agree. I do not agree with that. That old circular. कहते हैं वो विड्रॉ क्यों नहीं हुआ? ऐसे तो कई सर्कुलर जो विड्रॉ नहीं हुआ. लॉ तो बदल चुका है. लॉ तो पुराने सर्कुलर का पुराने काम के लिए तो है ना. आप उसको विड्रॉ लिखने की क्या जरूरत है? लॉ हैज बीन चेंज्ड. दैट सर्कुलर इज नो मोर वैलिड.
Why are you talking about that circular जो 20 साल पुराना आया था लॉ में? रोजाना चेंजेस आती है चैरिटेबल ट्रस्ट. चलिए और पूछिए. Sir, Sorry, yes, sir. Prakash, I haven't finished the question. So you were saying so there is a capital gain on the investment in the mutual fund to be accounted and reported. वही बात हो गई, वो जो एफडीआर म्यूचुअल फंड, नो क्वेश्चन. एक ही बात है, वो एफडीआर म्यूचुअल फंड, नो क्वेश्चन. It is not an capital, it is investment. It is not expenditure, sir. It is investment. You have to make a capital expenditure. तो एसेट खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ये जो म्यूचुअल फंड है, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर. एफडीआर इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज इन्वेस्टमेंट. इट इज 11.5 इन्वेस्टमेंट. तो वो नहीं मानी जाएगी. ये गलत बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलत है. But sir, there is a column. If there is a capital gain, there should be a column for reporting those capital gains. And my understanding from the friend was that there is no column where you can report the capital gains. Suppose there is an investment also which have got capital gains. There has to be a column to report the capital gains. फॉर्म 7 में कॉलम नहीं है. This is what the understanding I'm getting from a friend. That there is 10B फॉर्म में तो जरूर होगा सर. 10B फॉर्म में होगा. Okay. Fine. वो will be in फॉर्म 7, 10B में होगा. Okay. Okay. Fine. Prakash ji, please. Sir, there is a question, sir. It says that whether donation of any amount can be claimed as exempt, any condition on for investing such amount received. So whether there is any condition. सर, जब आपके पास पैसा आता है ना, तो या तो आता है जनरल फंड के लिए या कॉर्पस फंड के लिए. कॉर्पस फंड को सिर्फ 11.5 में रखना है. आपको स्पेंड करेंगे तो एप्लीकेशन आपको जरूरी नहीं है, एग्जेम्प्ट है. जनरल फंड को तो वही 85%, 15% वाला है. लेकिन लोग देखो कितनी मिथ करते हैं. सपोज 1 करोड़ रुपए आया, वो कहते हैं हमने 15% जोड़ दिया. 90 लाख खर्च करके भी 15% का एग्जेम्पशन मांग रहे हैं. वो कैसे हो सकता है? अगर 90 करा तो 10 ही लाख का एग्जेम्पशन होगा. अगर आपने 95 कर दिया तो आप एक्यूमुलेट 5 लाख कर सकते हैं. और आपने 100 कर दिया तो एक्यूमुलेट तो 0 होगा. अरे वो टू द एक्सटेंट इट इज अप्लाइड और नॉट अप्लाइड, तभी तो एक्यूमुलेट करना है 15%. लोग क्या कर रहे हैं, वो भी ले रहे हैं और 15% एक्स्ट्रा ले रहे हैं. ये पॉसिबल नहीं है सर. 85 और 15 है. अगर 70 करा है तो 15 85 होता है, बाकी 11.2 में जाता है. अगर 90 करा है तो आप एक्यूमुलेट कितना कर सकते हैं? 10. आपने 95 किया तो कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं? 5. 98 किया तो 2. 15 एक्स्ट्रा नहीं है. वो कहते हैं 15 तो हमारा बर्थ राइट है. और कौन सा बर्थ राइट है यार, ये तो बता दो. बर्थ राइट तो तब है जब आपने 15 से कम किया 85 से, तब बर्थ राइट है. ऐसे बर्थ राइट नहीं है. Sir, another question is that even if we don't need to enter the balance sheet detail since we have filed the return in the previous year, do we have to still scan and upload the financials in the portal for 10A? No. Once it comes, yes, वो ग्रे हो जाएगा एरिया. सारा ब्लैंक हो जाएगा, ग्रे. Another question is that this says that department has given provisional registration for 5 years, even though it was for registration. Sir, I told you, the wonderful people applied here, so that provisional registration that will be rectified. Don't worry, that will be rectified. ये computer mistake. This is not their mistake. वो computer ने उसको provisional दे दिया है. They will rectify it. That you will get regular registration. Don't worry. If it is for 5 years, you will get regular registration. If it is for 3 years, it is provisional. Another question is any shortfall out of the 85% for a Section 8 company for which accumulation, which form to file, Form 9A or Form 10? Again, repeat again. Any shortfall out of 85% for Section 8 company. Are you going to go for 9A or you are going to go for 11.2? ये तो आपके ऊपर है. आप फॉर्म 10 भरेंगे तो आपको 5 साल तक एक्यूमुलेट करना है. अगर आप फॉर्म 9A भरेंगे तो या तो इनकम रिसीव नहीं हुई, रिसीव हो गया तो आप सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए भर सकते हैं. आई अप्लाई नेक्स्ट ईयर. Okay, sir. 1 minute, can I take for a second, sir? One important. Yes, sure. प्रकाश जी, आपका जो बॉम्बे वाला क्वेश्चन है जो आया था ईमेल पे, नहीं सर, मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है. मैं तो मैडम के साथ शेयर कर लिया था. अच्छा, चलो फिर I'll probably pose the question. I have the question. Okay, sir. You can finish the next one, then I'll take. आप जो कर रहे थे वो नहीं सर, आप ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं. Okay. हाँ जी, बोलिए सर.
And sir, so there was someone who wrote to us, sir, from Bombay. He's saying, in some cases, the CIT exemption has rejected approval under 12AA for financial year 1920. They had sought an approval under 12AA. डबल अप्रूवल नहीं है, registration. Registration, okay. हाँ. On filing an appeal with the ITAT, it has been referred back to the CIT exemption. I know. I can't help it because so far you have not got registration. Even if it's referred back, there will be a problem. I have seen that they have not. The better way is to go to the commissioner exemption to get the certificate. If they don't get the certificate, better is to apply for provisional for the time being. Then you can keep on fighting. The point is, we went to the board. Sir. I know, but that fight will continue. The point is, at this stage, you don't have a registration number. And if you don't have registration number, how will you go for re-registration? You cannot go for re-registration unless you have a registration. So better way is to go to the commissioner exemption, show them and get it done. Whether they refuse it or what, to get it done. उन्होंने ये नहीं लिखा होता कि इनको ग्रांट किया जाए. There are two differences. One is to reconsider, to review. एक होता है कि that there should be granted registration. If the order is there should be granted registration, then they should immediately go there and get the registration. वैसे तो लॉ कहता है आप अप्लाई कर दें और 6 महीने में नहीं मिला तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन है. लेकिन प्रॉब्लम है उसके लिए भी अप्लाई कैसे करें? रजिस्ट्रेशन नंबर तो चाहिए. How will I apply in Form 10A without registration number? So therefore, better is to rush to the commissioner exemption, giving all those details and find out what can be done in this matter. Otherwise, file 12AB again. अब फिर तो वो प्रोविजनल का भी कर दीजिए, बाद में वो मिक्स हो जाए. ठीक है. प्रकाश जी. Yes, sir. Another question, sir, that is there. If the 15% calculation, how the 15% calculation has to be done? It is on the gross receipt or after expenditure, what is left? No, it is very clear. Earlier it was 15% of the income, and we used to fight in the institute. What is this 15% net income or that? We used to, you could not decide. But now it has been very made clear, 15% of gross receipt. Thank you very much. It is very clear. See the form number 7. In the form number 7, they very clearly mentioned 15% of gross receipt. So please, gross receipt, not the net income. Okay, sir. Clear? So the matter is over. Yes. And the form itself says it is 15% of gross receipt. And form is by notification. And notification is binding. So therefore, don't worry. It is 15% of gross receipt. Another question is, sir, can we upload the trust deed in vernacular language while applying you have to apply along with what you call converted into the language and that. Now the only question is Hindi a vernacular language or not? According to me, Hindi, English you can file. Okay, sir. There is no need to convert into this language, English. But otherwise, if it's in Gujarati or Punjabi or whatever language it is there, you will have to file a converted one and get it attested. So another question is on the provisional registration under ATG. What are the process that is to be followed under the ATG? Whether once you get it, you can take but within 6 months of the commencement of activity, go for regular approval. Provisional is given because they have not checked up your anything. When regular you will apply, they will get all the documents from you and they will give it. But that will be applicable from the back date also. But if that is rejected, then you will be liable to pay tax of the donation received earlier to the regular registration. Okay, sir. It is a long question, sir. I'm just reading, sir. Sir, if a trust deed is amended to change the trustee, adding objective, whether it is mandatory to get prior approval of the CIT exemption, then you have to go to the court to get the approval. Okay. And if not done, is there any issue while applying the registration under 12A? My point is, sir, if you want to change the object of the trust, the law says first you have to read your trust deed. In certain trust deed, it is allowed to you to change it. If it is silent, change of object, you have to go to the court. But other routine activities, if they all decide and pass a resolution, then things can be done through resolution and then you can get it changed. If it is Bombay, I still don't say anything because Bombay law is different.
public welfare trust, they may be requiring everything to be done through the charity commission. So I can't say about other places. About Bombay at least. Bombay means Maharashtra. Sir, there is another question is on the 115 TD, sir. How to understand After 115 T? 15 TD, Yeah. 115 TD will come into picture only when you have merged with the institution which do not have registration, or Okay. you are dissolved and you have not transferred those assets to some other, or your registration is cancelled. Your registration is cancelled. Then you have to pay 30% of the fair market value of all the assets minus liability, 30% tax. 3 circumstances. If you are dissolved, you have to, within 1 year of dissolution, you have to donate all those assets to other charitable trust which is registered. If you are merging with any other institution which do not get the benefit of 12A, you will have to pay, take all the assets minus liability, pay tax at 30%. And your registration is cancelled. You went for an appeal, you lost the appeal, then only it is done. Till that time it kept in abeyance. You filed, then you went to appeal, you went to High Court, you went to Supreme Court. Till that time it is kept in abeyance. And thereafter, if you lose the case, registration is cancelled. So then it is liable to pay tax on that. So whether this tax is the addition to the normal taxation, sir, or it is a complete full taxation, that part? 30% flat rate. Flat rate, sir. 30. And 1 minute, what is our normal taxation then? So, This is on assets and liabilities. This is not on income. Income is separate. This is all the assets minus liability. okay, And sir. one more thing, 115 TD, after paying tax, don't think that money belongs to you. That asset belongs to you. That is public at large. Still, it is not yours. Somebody came to me for an opinion, sir, I want to pay tax under 115 TD to the government. Then can I take all that school, college in my kitty? I said, nothing doing. Once it is given to the trust, it is for public at large. You cannot take it back, even after paying tax of 30%. Because the language of the 115 TD says that it is in addition to the income tax chargeable in respect of total income. Sir, or current year income. Yes, sir. Current year income then addition hi hoga na. I'm not talking on income. I'm charging tax on assets minus liability. You are mistaken. Sir, I'm not talking about income part. Income to lagna hi hai. I'm talking about total value of the asset minus liability. You are paying tax on that. With some exception. Those exceptions which where you have already paid tax in the past. That is the exception. Otherwise, it is not tax on income. It is a tax on the value of the asset minus liability. The word used is accreted asset. Have you used the accreted income? It is on accreted income, not on regular income. Regular income is regular income. This is accreted income. Another issue is, sir, another question. Maybe another last 1 or 2 questions, because it is already. Yes, sir. Yes, sir. Sir may have something else thereafter, so let's keep the time. 7 o'clock. Last question. I'm taking the last question. If a 12A registered society converts into Section 8 company, will it require to apply for the new registration? सर देखिए, आप registration से 12A से already registered थे, but you got your registered under what you call as a trust. तो उनको कैसे पता लगेगा? You will have to apply for registration because now you are Section 8 company. Section 8 company हुआ ना, तो आपका वो change हो गया ना, modifications. Yes, modification में जाके करना. Another last question, sir. I'm taking the last question, sir. Donation to. कितने last question होते हैं सर? बस last. Second last होना फिर ये last. This is last question, sir. It is from Bhavya. It says that donation to other trusts registered under 12A or not will be considered as application of money or application out of current income, yes. Out of accumulated income, no. If you give it out of current income, it is application. If you give out of application income, it is not application. And if you give for corpus, it is not application. If donation is given for corpus of the other trust, still it is not application.